Hi, hello friends. FELA Talks के continue series में today we are talking with higher education leader and my mentor Professor Dr. Sunil Rai, presently a Chancellor of UPS University, Dehradun. Welcome, sir. Thank you very much. I am delighted to be participating in FELA Talks. Thank you. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक सर। फेला टॉक्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया, उस कॉन्सेप्ट का कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। हम सिर्फ समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या फिर हमारे फॉलोअर, आपके फॉलोअर या फ्यूचर जनरेशन जो हमारी जैसे आगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ रही है, हम बस आपके विचारों को समझ के एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर समझ के उनको फॉलो करके एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास हम फेला टॉक्स के कंटेंट इस क्रिएटिंग प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। तो इस फेला टॉक्स को शुरू करते हुए पहला जो मेरा सबसे पहला आपके साथ जो क्वेश्चन है, जो मैंने सभी एजुकेशन लीडर से पूछा, मेरा सबसे महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न भी यही रहता है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू बिकम अ एजुकेशन लीडर? Thank you very much. Very pertinent question. To be an education leader, I would place that there are three things that are required. First and foremost thing as an education leader that one should have is a sensitivity towards developing society and nation. Right, sir. Because you are creating the products that you create in your educational institutions Right. are the ones who are eventually going to take society and nation forward. Right. And therefore, the first and foremost thing that an education leader must have is a sensitivity towards development of society and nation, which may be in terms of economics, which may be in terms of sustainability, which may be in terms of growth. So all that. So first and foremost thing is about sensitivity to society and nation is the first thing that will. Right, sir. Well said. The second characteristic that I would look for or we look for in an educational leader is about innovation. Innovation is extremely important because the way things are changing. Right. The world was exposed to pandemic. Those educational institutions which could weather that storm well are still sustaining. There are many of them who have still to come out of it. Completely. Situations will change, markets will change, economics will change. There is a Russia-Ukraine war that changes that complete equation of geopolitical situation as far as petrol and oil is concerned. Right. Likewise, any happening anywhere in the world changes it's like a kaleidoscope. You just give it one twist and the whole situation changes. Change. Completely right. Therefore, you will have to be innovative. Innovative in terms of the kind of programs that you will provide, innovative in terms of how you will prepare students to take care of that kind of an eventuality. So the second one would be about innovation. And the third aspect will be about economics. Right. Education economics. Education economics. Okay. So as an education leader, you should have a full understanding of how the institution is becoming sustainable as far as economics is concerned. If you want to create labs tomorrow, if you want to create infrastructure tomorrow, if you want to invest in terms of research, in terms of very good faculty, you will need money. And therefore, you should have a good understanding of how to run educational institutions in a profitable manner, Right. in keeping with all the regulations, Completely right. with ethical conduct. Right. But these are three things as per me which an education leader that we will look for as far as today's sensitivity towards society and nation. The second one, as I said, will be innovative. Right. And third one is economics, Third one. education economics. तो सर आपने भी ये तीनों पॉलिसीज को या फिर इन तीनों वैल्यूज को ही फॉलो करके जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, इन्हीं तीनों को प्राइमा फेसी हमने रखा है। ये so we call UPS as University of Purpose. राइट। वहीं पे ये पहली बात आती है sensitivity of society, environment. राइट। As UPS, we work with about 13 villages राइट। जो हमारे आसपास हैं। जी। उन विलेजेस को उनको हम लोगों ने दो तीन चीज़ें हमने जो विलेजेस के साथ में काम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज अबाउट हेल्थ। राइट। सो वी टेक केयर ऑफ, वी सपोर्ट देम, वी प्रोवाइड देम मेडिसिन, वी प्रोवाइड देम नो हाउ, स्मॉल थिंग लाइक वी प्रोवाइड देम इट्स अ सेंसिटिविटी। it's a sensitivity towards one is about the Right. health, Right. particularly towards girl children.
Right. because they have far more problems, Right. girl child, Right. when they are supposed to have good health, menstrual health, Right. hygiene, Right. and all that. Right. And people don't talk about it. So we work with these villages. We distribute sanitary napkins and we teach these girls how to behave when the puberty comes in and things like that. Right. And also what is healthy living. So one is health. The second one we look after is the skills. So we are working with all these villages to provide them skills so that they become employable, Right. so that they can do their own economic activity better. Right. We teach the ladies how to improve their own, earnings in Good. the house by way of teaching them, embroidery, stitching, and things like that. Whatever, Right. what have you. Right. Right. So we work towards skilling. So we also take some aspect of the National Skill Development Council, and from there we try and skill. Basically, it's IT skills and other employment skills that we want to give people. Right. The third thing that we do is we are preparing students for communication and personality development, Right. village students, Right. so that these people can join, government services, they can join defense and things like that, and even other industry. So with these three things, we are working with these 13 villages and very regularly, and all villages. So that's social sensitivity. We also work with government of Uttarakhand for various projects that they have. There is a problem of pine needles in Uttarakhand. We are working on that project. ये पाइन नीडल ऊपर से गिरती है, हाँ बिल्कुल, और वो ग्राउंड कवर कर लेती है. राइट. पानी अंदर सीप होता नहीं है. राइट. Rivers are drying up. That's a huge problem. Right. We have now found a way of getting those pine needles and converting them into combustible material. Okay. And use them in chulas, which also we have patented. So likewise, any kind of project we supported them It's during innovation. pandemic. It's an innovation. It's an innovation. It's an innovation. Very So right. so that is the innovation. The second part that I was telling you Right, that we right, need to right. work out. Innovation also, we were very quick to, when the pandemic came. Now we have totally switched on blended learning mode. Okay. See, one was pandemic time, it was a situation. Right. But now we have found that there is enough value in going blended, because particularly practice oriented skills can only be learned in the industry. If it's a management graduate, out of 2 years, if 6 months the student invests in the industry, will learn better. So why should I teach him? So if I want to free him for those 6 months, then I should cover the course of 2 years in 1.5 years. Very right. And I can do it in a blended mode, so that जो आप सीख सकते हो वो सीखो, सीखो. जो नहीं सीख सकते हो वो हम सिखाएंगे. Right. So that is the innovation that we have worked out. Innovations in programs, innovations in partnerships, and so on and so forth, that we have worked out. And third thing is on the economics part that I said. So we are very highly digital. UPS is very highly digital. Completely. So therefore, we are able to monitor our processes for their efficiency, for their operational efficiency, for their economic efficiency. कहाँ पैसा हम ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं, things like that. So we have actually found out ways of how to optimize money in terms of procurement, in terms of, जहाँ 10 लोग चाहिए हमने अगर 20 लोग लगा रखे थे. So we have also optimized on that, on housekeeping, on other services. Right. And now because we've got a digital dashboard. Every level has got a digital dashboard. I get a dashboard. I used to get it as a vice chancellor. Now I will get it as chancellor. But a manager will get a dashboard which is about him, how much electricity was consumed last month vis-a-vis last to last month, right? What had been the teaching hours in that school versus this school. Right. The dean can find out which of my faculty is engaged, which of my faculty has changed classes, and things like that. So the economics has been taken care through digitization and improvement in processes. राइट सर, आपने जो वैल्यूज़ बताई बीइंग एजुकेशन लीडर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपने, सच में एक अच्छा एजुकेशन लीडर बनने के लिए अगर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाता है, तो माइट बी कोई भी एजुकेशन लीडर अपने एक इंस्टीट्यूशन के अनदर लेवल पर लेके जा सकता है. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, सब जानना भी चाहेंगे, आप भी एक रिसर्चर रहे हैं, आपने अपना पीएचडी कंप्लीट किया. भारत के क्या विश्व के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान से, एक बहुत मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी. मैं चाहूँगा इस डिस्कशन में आप उसको कोट करें. एंड even me and everybody wants to understand, being a researcher, what was your success mantra? And for the coming community, जो आगे फ्यूचर जनरेशन आ रही है या हम हैं, हमें आज के टाइम में अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर काम करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाए? प्लीज सर. Thank you, Som.
So I have been exposed to this whole culture of research at IIT Mumbai, where I did my MTech from. Right, sir. I've also done my PhD from BITS Pilani. Right, sir. Now, these two institutions are one of the very fine institutions in the country In the as far country. as Globally as well. research output is concerned. Right. So now there are three things that I would recommend that through my experiences of research that should be always borne in mind. First and foremost thing is research should be on purpose. रिसर्च फॉर रिसर्च से कि मेरे पेपर्स पब्लिश हो जाएंगे हाई जी। स्कोपस इंडेक्स में एंड एज ए फैकल्टी वी आर एक्चुअली नोन एज फैकल्टी बाय द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस वी होल्ड ऑफ देम हाउ मेनी ऑफ दोज पब्लिकेशंस आर इन हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स राइट, यूजुअली सब इसी चीज को सो फॉलो इसको ही करते हैं। फॉलो करते हैं जो एक अच्छी बात है बिकॉज एटलीस्ट रिसर्च की क्वालिटी इंश्योर होती है when your work is being published in these international journals which are reviewed journals Right. and which are high impact factor more than 4.5 and so on and so forth, then such a work is of at least a basic quality is maintained. Right. The issue here is about purpose. Purpose. So purpose of research should not be to accumulate more research papers and patenting and all that, unless these research has to be, it is either it is helping the society And user. and user Right. here and now. Here and now. Right. Here and now is important. Here Right. is we as a nation and a society cannot afford to have research ki 5 saal research chalegi, 10 saal research chalegi. We can ill afford. And in pandemic, this was proved because our pharma sector, our scientists, they could move fast and within 6 months they could come out with a drug. And we surpassed all the processes of medical trials, etc. And Modi ji took a very bold decision Right. that we will do our own way of trials, and we experimented, and we Right. were the first to, and the rest is all history as to Right. how. Who made their own, in-house We made our legislation. in-house drugs, and we made our in-house procedure of patenting, etc. We had made in-house procedures of clinical trials, so we were not driven by FDA and other people, which is okay. But then, so this is what is here. The research has to affect India. If a research is being done, if there is a problem of Haryana and some researcher is working in Haryana, then you should find out solutions for Haryana. Right. Whether it is for agriculture, whether it is for health, whether it is for industry, whether it is for economic procedure, whether it is for social behavior. Because Haryana's social behavior is different from UP, Right. is different from Maharashtra. Right. So therefore, the research has to be here for the local one. Right. And now means it should not take more time. If a research is taking many years, then that research will have no point unless it is done fast. So that should be the fundamental aim of a researcher, that my research that I am doing, is it on purpose? Right. It is on purpose, it helps the society, the end user, as you said, Right. and it should help here and now. If all regions improve, the whole nation will improve. All Right. nations improve, the whole world will improve, right? So therefore, this should be and I am thankful to such people who do these kind of research which help the concerned place, whether it is on agriculture research, medical research, and so we have to actually come up with our own solutions. The research, first and foremost thing, research has to be on purpose. On purpose. Now, to achieve the first one, research has to be collaborative. Okay. Collaborations between various institutions. Right. This university collaborating with that university, these two universities collaborating with that industry, this industry and this university set collaborating with the concerned government. Only then the research will be fast and it will be of purpose, that first one. You keep doing your research in your lab, I keep doing my research in my lab. Ultimately, we find the same solution, the same thing. No, society has not gained. And the time taken has become double. If it was that we decide, okay, this part you research, this part I research, we combine the two. Let's combine report. Right. And then this will help the society. So it has to be a collaborative effort. Right. You have to find like-minded partners, industry, and why should you go abroad? So basic thing is that there has to be a respect. Right. We are doing faculty exchange globally, but technically we are not doing Internally. exchanging of knowledge internally. Internally only. And with First the we should go industry. for it. Why should industry tomorrow, Hero Motors has a problem, Right. that they want to improve the clutch system, then why should they go abroad?
They should come. Your Hero Motors is located in Manesar, it is in Haryana. You got Haryana next to you, you got Rajasthan next to you, Right. you got NCR, complete UP and all next to you. There are fantastic universities. In all these places there are NITs, Right. National Institute, there are IITs. You can go to IIT Delhi and ask them to create. You can go to other NITs which is there in the region, you know. So there are NITs which are available, where other quality institutions which are available. So you go to them. So that is the kind of collaboration. For collaboration, the important thing is to give an opportunity. If you write off your own institutions by thinking कि ये तो नहीं कर पाएंगे या इनकी क्वालिटी वेस्टर्न वालों की तरह नहीं अच्छी होगी, आई एम नथिंग अगेंस्ट वेस्ट, but if this is how we need to develop our own kind of systems. And the good thing is that now things are happening. Right. Vande Mataram Express is one such good example of a collaborative research. Right. Right? The person who was retiring from the integral coach factory, and then he was asked, what would you like to do? He said, I would like to make a train which will run double speed than what is the train running today, at half the cost and half the time. And the government invested in that person. Today we have Vande Mataram Express which runs at 200 kilometers an hour. Right. Right? So the experiments work. A lot of people collaborated with that. IITs collaborated, IIT Delhi participated, IIT Roorkee participated, and so on and so forth. The railway system participated. A lot of people, industry participated. That is how it should be. So it was cumulative collaboration. It's a cumulative collaboration. So second aspect for a research after purpose is collaboration. It's collaboration. So unless, and this nation needs this all the more. Not that others don't need it. Right. In some way, they have figured out a way of doing some kind of collaborative research. It happens to, but this has to become a culture of purposeful research in a collaborative manner. And final thing is that, again, I will come back to when you talk of this kind of research, there has to be a research economics. Now, the research economics is, the research is an expensive thing. Right. Therefore, to create, now that collaboration is not only in terms, but also in terms of infrastructure and in terms of managing the resources of the country. Right. So coming back to that collaboration, SOM is a university in Faridabad. Right. There is a university I have in, let us say, Meerut. Right. Now, why should I create this two high-end labs for biotechnology? Because I will have to buy those microscopes which will cost about 1 crore. Right. I will invest about 5 crores in creating. You will also invest 5 crores in investing. Ultimately, both of us are doing the same thing. Right. Right. Why can't SOM and I combine and say, okay, microscope आप ले लो, टेस्टिंग फैसिलिटी हम ले लेते हैं, ताकि बच्चे आके जब उनको माइक्रोस्कोप पे जब उनको फंडामेंटल टेस्टिंग करनी है वो सोम के पास जाएंगे. सोम हैज गॉट द एडवांस माइक्रोस्कोप व्हिच कॉस्ट 1.5 करोर्स. बच्चे उसमें टेस्टिंग करके आ जाएंगे. उसके बाद में जब उसको रिएजेंट के साथ टेस्टिंग करनी है फाइनली वो हमारी लैब में आ जाएंगे. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ यू स्पेंडिंग 1.5 and 1.5 crores, it is 1.5 and 1.5 crores. And after all, as a nation, we can ill afford to waste resources. हम उस देश से आते हैं जहाँ एक छत के नीचे 3-3 जनरेशंस रहती थी. बिल्कुल रहती थी. ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है. एक ही बिस्तर पे हम, हमारे छोटे भाई और छोटे भाई, हम लोग सब सोया करते थे. एक ही टॉवेल होती थी. See, we used to have this kind of resources. Today, you waste resources by everybody should have his own things, and ultimately you don't need all that. So हमारा जो accreditation जो system है, क्या वो ये allow करता है? That is where, so thank you for bringing out this. This is the problem. That this collaborative research and collaboration of infrastructure, the regulators have to agree. So that they give SOM also 5 points and they give me also 5 points because it's a collaborative research. They should not say, I haven't got testing facility, and they should not say, you haven't got the microscope. So the regulators have to give regard that this is a consortium. So that cluster system, the entire cluster should be given the same kind of consideration. After that, there are ways of measuring output. So the regulation thing has to change. Just before this, I was talking to you on some other, this one. Right. That why is the emphasis on infrastructure, number of rooms you have, acres of land you have. Right. As a nation, we can ill afford this. Right. We can ill afford. It is basically to create this. So there are certain subjects which are taught in your university.
Children can go and live in that university, learn that, and come back in 2 months. Some of them can. Now we don't have to multiply the infrastructure on that. So we should be able to conserve. So I think the regulators They have must think to about it. think about of valuing this collaboration. राइट राइट, क्योंकि मैकेनिज्म जब तक अलाउ नहीं करेगा, अब तक फेला टॉक्स के 4-5 सीरीज के अंदर, इवन आई वुड लाइक टू कोट हियर प्रोफेसर डॉक्टर उमा भारद्वाज, presently she is a vice chancellor in Noida International University. So just last week we were in a FELA talks and she clearly mentioned the same thing कि हम ग्लोबल फैकल्टी एक्सचेंज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कहाँ कर रहे हैं? Very कोलैबोरेटिव हमारी सोच है ही नहीं. Very तो पहले मैकेनिज्म रेगुलेटरीज को ऐसा बनाना चाहिए कि पहले यहाँ हम एक साथ कुछ करें, उसके बाद बाहर के बारे में सोचो कि यही रिसोर्सेज इतने हैं कि जिन रिसोर्सेज को अगर हम शेयर कर लेते हैं तो मे बी वी कैन सेव अवर सो मेनी कॉस्ट एंड एज वेल वी कैन गिव अ बेटर क्वालिटी. Absolutely. Maharashtra government is making an attempt Okay. of trying to create this cluster university system, which is exactly what we were just now talking. Right. That we are in a same cluster, Right. and this is a cluster which is looking at biotechnology. So you can do it whichever way, Right. geographically or by practice wise. ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में काम करेंगी, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मैकेनिकल सिस्टम्स में काम करेंगी, ताकि द होल नेशन improves. Because this 5 trillion economy, which is our aim as a nation, Right. what others did in 50 years, we have to do it in 5 years. Very completely. And that is why collaboration is the only key. Right. Ultimately मतलब इतने सारे एसेट्स को बाय करने के बाद यूनिवर्सिटीज के बीच में जब हम बात कर भी रहे थे ऑफ द कैमरा कि कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, क्वालिटी पर फोकस नहीं कर रहा है. Absolutely. मैंने 2 करोड़ की एसेट खरीदी है तो मुझे अल्टीमेटली अपने यूजर को यहाँ लाने के लिए मुझे 3 करोड़ की खरीदनी पड़ रही है. तो हम कंपटीशन तो कर रहे हैं. Absolutely. Because आप एडवर्टाइज कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हैं. मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी बड़ी मशीन है, आप मेरे पास आके रिसर्च करो. तो बच्चे वो देख रहे हैं. राइट. जबकि हम ये बोलें कि सोम और सुनील राय मिलकर के जो इनकी 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट. बच्चे वहां भी आएंगे, बच्चे यहाँ भी आएंगे. यहाँ भी आएंगे. बिल्कुल. And then you don't have to waste money in unnecessarily advertising, ATL and all that, which will go on. And that's what Western universities don't advertise. So can we escalate this issue on our FELA platforms? Yes. The FELA, basically the purpose of the FELA is the same. Overcoming the barrier in education. Absolutely. जो हमारा tagline है. Absolutely. So this is one of the barriers. So is it possible, can we take this concern to the regulatory authorities? Absolutely. कि हमने ये identify किया है problem, कि why you are not thinking about it? Yeah. This constructive collaboration with due economics and purpose, FELA, I would recommend, should put up a white paper to the regulators. Right. So being a researcher, what was your success mantra? आपके सक्सेस मंत्रा क्या थे रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए? See, basically it's all about, there are 3 things in that again, I will always say. One is your belief in whatever you are doing. That you earlier mentioned the purpose. हाँ, अगर नहीं belief, one is purpose, other is belief कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका कोई सेंस है. See, am I doing it only for research sake or am I doing it on purpose? Right. See, it's an idea that I want to work on. Right. I am trying to find, so Dr. Brady's example I would like to quote. Okay. Dr. Brady is an ideal example. He is now world-renowned oncologist. Okay. Early cancer detection. That fellow was basically a mathematician. Okay. And his mother-in-law died of cancer. He and his wife tried a lot to save her, but they could not. Okay. At the age of 56, he decides that I will find an answer to early detection of cancer. But then he did not know biology, he was a mathematician. Right. Then he started studying biology. First he tried to study higher biology, he did not understand. He went to class 5th. Right. 5th की biology पढ़ी, 6th की पढ़ी, 10th की पढ़ी, 12th की पढ़ी. He trained himself in biology. Right. So that he can understand cancer क्या होता है, कैसे होता है. He understood. Then he also studied medical books. In 4 years' time, he knew more than any medical doctor about cancer. Very surprised. Mathematician. Oh. And then because he was a mathematician, so he could use probabilistic theory and other mathematical models to find out as to how cancer happens and all. And mathematical modeling, so he has found out a way where cancer is detected right before the first stage. Okay. And if cancer is detected before first stage, it's curable.
Completely. It's only from late हाँ, second stage late second stage, right? that you are not curable. Right. So this is something which is a belief system. So you will do research only well when you have got a belief that जो आप कर रहे हैं, जैसा आपने बोला पर्पस जैसी अपनी बात हुई है. जी, So one is about that belief system that जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, that is going to this. आपको उसमें बिलीफ होना चाहिए. Belief होना चाहिए. Second one is there is no shortcut. Like Brady read from class 5th to this. Lot of researchers do not do the good reading. Okay. You already there is lot of knowledge. You first try and understand from उनका the, assumption है ऐसा कि हमने पहले ही बहुत पढ़ा हुआ है. हम ही ना, या तो वो है हाँ, या दूसरा ये तो किसी को आता ही नहीं है, मैं ही पहला करने वाला हूँ, मैं ही पहला करने वाला. मैं ही पहला करने वाला हूँ. एंड यू फाइंड इट आफ्टर 5 years कि इसके तो 10 सॉल्यूशन 3 साल पहले आ चुके हैं. So at least you will build on it. So basically it's the reading or what we call literature survey. Right. So my emphasis always to people who are doing research is a very extensive and honest literature survey. Okay. So first is a belief system, second Right. one is a literature system. Third one is use of technology. You cannot do research well unless you use technology. Use technology as much as you can. In a IT. present scenario. हाँ, आपके टाइम में भी था टेक्नोलॉजी? नहीं, आप उसको जैसे अभी मुझे एक रिसर्च करनी है हाँ. कि रोड पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं. राइट. ठीक है, या फलाने जंक्शन पे, साकेत के जंक्शन पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं. जी. तो देर आर वेज कि मैं इंटरव्यू करूं लोगों को जिनके एक्सीडेंट हुए थे, बट देर आर मेथड्स टुडे. सीसीटीवी इंस्टॉल कर दूं, सेंसर्स इंस्टॉल कर दूं, रोड में सेंसर लगा दूं कि स्किड हो रहा है रोड के. देर आर सेंसर्स. आई इंस्टॉल सेंसर्स, कलेक्ट द डेटा, analyze it using artificial intelligence and and then I can come up with, create a mathematical model, test it in the computers and then come out with the result. Right. This is use of technology. This is the use of technology. It's not just Right. IT. It's also sensors. It's Right. also closed circuit TV camera. Also use other methods of surveying, of interviewing people and things like that. So third thing is use of technology. Technology and tools. There are tools available. Right. Right. Use those. नहीं, वेल सेड सर, वेल सेड. एंड आई थिंक जो भी रिसर्च आगे करना चाहते हैं अगर वो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बात तो सही है. ओवरऑल टेक्नोलॉजी तो हमारा बिहेवियर बन चुका है सर. नाउ टेक्नोलॉजी अवर बिहेवियर, इट्स नॉट ओनली अबाउट IT. इफ वी आर टॉकिंग इन दिस फेला टॉक देन टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व. एंड नाउ हम पूरे वर्ल्ड के साथ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या ऐसी चीज़ थी. And collaboration is also involved. Right. Anybody who wants to learn from FELA Talks, please learn. Please learn. Please learn. They will keep building. Right. Somebody talking about it after 1 year will give much more other kind of advanced inputs. Right. Right. That's how things build and grow. Completely said. So I expect कि जो भी इस FELA Talks के सीजन को सुन रहे होंगे और सुनील सर की इन बातों को समझेंगे तो माइट भी उनको रिसर्च करने में आगे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पर्पस तो बट ऑब्वियस रिसर्च के लिए पर्पस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करने क्या वाले हैं और वो अल्टीमेटली सोसाइटी के क्या काम आने वाला है. तो माइट भी आपकी रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो सकती है. राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इमेंस नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर की है. हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. राइट सर, आपने रिसर्च को लेकर के जो वैल्यूबल 2-4 हमें पॉइंट बताए थे, पर्पस के बारे में बताया, इकोनॉमिकल अप्रोच के बारे में बताया, वो सच में बहुत ज़रूरी है. इसी डिस्कशन को मैं आगे लेते हुए समझना चाहूँगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था कि एम्प्लॉयमेंट भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा रिसर्च कर लिया, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ली, बट एक इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड एक सोशल इंजीनियरिंग है हमारी. जिस सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब या फिर एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के NEP 2020 में अब इंटर्नशिप्स के ऊपर जोर बहुत ज़्यादा दिया गया है. नाउ द गवर्नमेंट इज हाईली फोकस्ड ऑन इंटर्नशिप. Even the government wants the students from the class 8th and 10th and in their secondary education they must go for the internship. और higher education के अंदर तो now it is very important. Even now the internship is important for the humanity courses as well. So being an education leader, mentor, you are running successfully, you are running a very renowned institution, Petroleum University Uttarakhand. आप इंटर्नशिप्स को और एम्प्लॉयमेंट को कितना तवज्जो देते हैं और एक अच्छा इंटर्नशिप लेने के लिए बच्चे के लिए या फिर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए यूनिवर्सिटी को किन टूल्स की ज़रूरत है और बच्चों को किन टूल्स की ज़रूरत है? आई वुड लाइक टू नो दैट. केक ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग. राइट. पढ़ाई की उसके बाद में अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है जी
तो उस पढ़ाई वो निरर्थक हो जाती है, पर्टिकुलरली फॉर ए ग्रोइंग सोसाइटी लाइक अवर्स। राइट। और जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो प्लस। सो 3 चीज़ें हैं इसमें, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें। जी। सो व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी? द आइडिया इज कि हमारे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पढ़ने के बाद में बच्चा आगे जीवन में और कितना अच्छा करेगा। जी। 3 तरीके हैं। जी। एक तो एम्प्लॉयमेंट है जी। कि उसको बढ़िया जॉब मिलेगा अच्छे से कैंपस से, और वो दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप है जी। कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तीसरा हायर एजुकेशन है कि वो किसी एक निश टाइप की एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ यूसी डेविस है या यूसी बर्कली है, जो एक स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर, किसी बच्चे को टेक्नोलॉजी और म्यूज़िक करना है तो ही शुड गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली। राइट। ठीक है ना? और किसी को अगर हेल्थ केयर और उसमें करना है, शुड गो टू यूनिवर्सिटी यूसी डेविस। किसी को मेडिकल और टेक्नोलॉजी में करना है, शुड गो टू यूसी कैलिफोर्निया, राइट। लॉस एंजलिस। राइट। तो ऐसे करके तो 3 चीज़ें हैं इसमें, जी। एम्प्लॉयमेंट, गुड प्लेसमेंट, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरी चीज़ है हायर एजुकेशन। राइट। ये आउटपुट होना चाहिए राइट। बच्चे का, तो फिर वो कॉलेज बढ़ता है, उसी से फिर वो वहाँ पे बच्चे अच्छे बढ़ते हैं, उसी से समाज बढ़ता है। और इसको करने के लिए इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल है। जी। इंटर्नशिप अभी आज के टाइम में, इनफैक्ट ये इंटर्नशिप इंजीनियरिंग में होती है बिटवीन 3rd एंड 4th ईयर, जी। और बिजनेस कोर्सेज में होती है बिटवीन 1st एंड 2nd ईयर। राइट। 3 ईयर प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली, उनमें तो कहीं इंटर्नशिप का प्रावधान है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप। तो हमने इसका एक मॉडल यूपीएस में बनाया, जी। जो एक अब तक हमें लग रहा है कि वो उसने काफ़ी कुछ सक्सेसफुल वो मॉडल जा रहा है। जी। 4-5 साल में जब ये बच्चे और एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप पकड़ेंगे अपनी अपनी जगह, जी। तो ये 3 चीज़ों का हमने इसमें ध्यान रखा हुआ है। हम्म। उसमें हमारे यहाँ एक 4 ईयर प्रोग्राम में हर साल के एंड में एक इंटर्नशिप होती है। ओके। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में बच्चे को सोशल इंटर्नशिप करनी होती है, ओके। किसी एनजीओ के साथ कहीं ना कहीं जाके। किस आप प्रोग्राम में सर? जो भी 4 ईयर प्रोग्राम है, जो भी 4 ईयर प्रोग्राम 4 है। ईयर, बीटेक है, बीई है, राइट। बीटेक, कोई भी बीटेक है, वो कंप्यूटर Right. साइंस है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, लॉ है, राइट। सब जितने भी 4 और 5 ईयर प्रोग्राम है, आफ्टर फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट हैज टू गो फॉर सोशल इंटर्नशिप। सोशल इंटर्नशिप। 3 ईयर प्रोग्राम में अभी हमने कंपलसरी नहीं किया है, पर उनको बोला इट्स अ गुड थिंग आफ्टर फर्स्ट ईयर यू गो फॉर सोशल इंटर्नशिप। राइट। सेकेंड थिंग इज आफ्टर between second and third year, I'm talking 4 year program, all students are required to go to one of the internship. Either you go and work with a startup at the end of second year, राइट। or you work with government ओके। projects, ताकि आपको एक विजन आए कि बिजनेस लगाना या कोई जो मेगा प्लानिंग गवर्नमेंट करती है वो किस तरीके से होती है, वो रियलिस्टिक लर्निंग आपको मिलेगी इंटर्नशिप से ही। इंटर्नशिप से। तो ये 6-6 हफ्ते की इंटर्नशिप्स हों ओके। मिनिमम। राइट। आइडियल इंटर्नशिप पीरियड इज 8 वीक्स। राइट। उसके बाद में बिटवीन 3rd एंड 4th ईयर इज द प्रोफेशनल इंटर्नशिप। राइट। सिविल वाला है तो वो सिविल में इंटर्नशिप करेगा, आईटी वाला है तो वो आईटी में इंटर्नशिप करेगा, फूड टेक्नोलॉजी वाला है तो वो किसी फूड टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटर्नशिप करेगा। तो ये 3 इंटर्नशिप्स है। तो इंटर्नशिप फॉर बिल्डिंग योर सेंसिटिविटी टुवर्ड सोसाइटी, internship for understanding the business environment, राइट। and internship to understand the domain. राइट। ये 3 इंटर्नशिप आप करेंगे तो ही पक्के बनते हैं। मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी इंटर्नशिप में सर कि शायद इंटर्नशिप कहीं ना कहीं बच्चे को इस चीज में भी हेल्प करती है, जो करियर वो सोचता है कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे ये बनना है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि करने के बाद दे सेड इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। एब्सोल्युटली। डॉक्टरी करी, बट फाइनली ही सेड नो, आई डिडंट बॉर्न फॉर द डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ आर्टिस्ट. So might be in between of academics, if the student is going for the internships, so might be he or she can identify his skills कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं. वेरी वैलिड पॉइंट। इसीलिए अगर सोशल सेंसिटिव वाली जो सेंसिटिविटी की इंटर्नशिप है जी, उससे बच्चा जाके देखता है, सब तरीके की चीज़ें एक्सपोज होती है सोसाइटी में, सब तरीके की प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ की जी. प्रॉब्लम है, जो फूड की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम्स है। जी, वो देखता है, कहीं ना कहीं अंदर एक स्पार्क आता है कि मुझे तो ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है. ऐसे ही सेकंड इंटर्नशिप में भी उसको और विजन बनता है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट
internship gives you an early exit to the aim that you actually want. That you actually want. So Right. internship इसलिए भी बहुत जरूरी है, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है. तो एनईपी में मतलब क्या डेडिकेटेडली इसको लेकर के एनईपी में ये कहा गया है कि इंटर्नशिप कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, जी, कम जी. से कम जी. मिनिमम. हमने तो उसको और टर्न करके 8 हफ्ते की इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 8 हफ्ते की इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये 24 यानी ऑलमोस्ट हाफ अ सेमेस्टर की हमने इंटर्नशिप कर दी है. उसके अलावा फिर हमने वो जो 3 ट्रैक की मैंने बात की थी, इंडस्ट्री ट्रैक, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक, हायर एजुकेशन ट्रैक. राइट. यूपीएस ने जो करिकुलम को पूरा ऐसे एडजस्ट कर लिया है कि 8th सेमेस्टर यानी जो आपका आखिरी सेमेस्टर, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी. ओके. सारा कोर्स हम 7 सेमेस्टर तक पूरा करेंगे. कंप्लीट कर देंगे. 8th सेमेस्टर में अगर कुछ पढ़ाई होगी भी तो वो ऑनलाइन होगी. ओके. आप फ्रीली जब आप पढ़ सकते हो पढ़ो, ताकि आप, आइडिया है कि ये 6 मंथ्स या तो आप इंडस्ट्री में काम करो, बिल्कुल ठीक. या आप एंटरप्रेन्योरशिप लगाने की कोशिश करो, हम सपोर्ट करेंगे, राइट. या आप रिसर्च करो. आपने 6 महीने में रिसर्च की और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को भेज दिया बर्कली, और बर्कली से आपको किसी प्रोफेसर ने बोल दिया कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, आप आइए हमारे साथ काम कीजिए. हायर एजुकेशन. राइट. ठीक है. या किसी आईआईटी के प्रोफेसर को लगा कि भाई ये बच्चे का ये जो काम कर रहा है मेरे साथ अलाइंड है, आप मेरे साथ आके काम करो. राइट. नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में किसी साइंटिस्ट ने देख लिया. राइट. तो ये जो 3 ट्रैक हमने कर दिए हैं. सो इंटर्नशिप शुड बी, इन माय बुक, 25% ऑफ द एजुकेशन शुड बी थ्रू इंटर्नशिप. 4 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल इंटर्नशिप होनी चाहिए. 3 साल का प्रोग्राम है तो 8 महीने होना चाहिए. 2 साल का प्रोग्राम है तो 6 महीने इंटर्नशिप होना चाहिए. इंटर्नशिप की इतनी वैल्यू है. ओनली थिंग इज इंटर्नशिप को अच्छे से स्ट्रक्चर करना चाहिए, ताकि बच्चा वहाँ जाके सीखे, डेटा कलेक्ट करे, उस पर एनालिसिस करे. देयर शुड बी ए गाइडेंस कंटिन्यूसली गिवन बाय द यूनिवर्सिटी. जैसे हमारे पास एनजीओ के में जब बच्चे जाते हैं, एक यहाँ फैकल्टी मेंटर होता है और एक उधर प्रोजेक्ट गाइड होता है. ओके. एनजीओ में दोनों मिलकर के इस बच्चे को समझाते हैं क्या करना चाहिए. हर 2 वीक में एक रिपोर्ट उसको सबमिट करनी होती है. अगर नहीं आई है तो हम उनको फिर बताते हैं भाई ये हुआ नहीं है प्रॉपर. अगर आपकी इंटर्नशिप की फाइनल रिपोर्ट 1 महीने के अंदर नहीं आई है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में हम जाने नहीं देंगे. सो दैट देयर आर सम काइंड ऑफ सीरियसनेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटर्नशिप. इंस्टीट्यूशंस भी अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि वो इंटर्नशिप को अच्छे इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर रहे हैं. क्योंकि अर्लियर जितना अगर मैं अपना समय जानता हूँ तो उस वक्त इंटर्नशिप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था. हमें बोल दिया जाता था कि अल्टीमेटली आपको एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, आप उसे सबमिट कर देंगे तो आपको आपका कोर्स मार्कशीट मिल जाएगा. पहले यही था. बट नाउ इन दीज डेज गवर्नमेंट इज हाईली फोकस्ड. इवन इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैं भी विजिट कर रहा हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें वो इंटर्नशिप को बहुत तवज्जो दे रहे हैं. बट हाँ, जो आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ये होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी अगर इसको मॉनिटर करती है तो इसका आउटकम ज़्यादा होगा, रेदर देन इसको बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाए. बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाए. इसी लाइन में इट्स इम्पोर्टेंट दैट जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जी अगर ये फॉरेन में इंटर्नशिप करेंगे जी तो ये, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया इज नाउ नॉट ओनली अ बिग मार्केट, राइट. इंडिया इज ऑल्सो बिकम ए बिग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज. बिग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज. तो अभी तक तो सर्विसेज हमारी आईटी सर्विसेज थी, अभी हेल्थ सर्विसेज होंगी, मेडिकल सर्विसेज होंगी. ये इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. राइट. तो ये जो चीज़ें होंगी, अगर बच्चे फॉरेन में इंटर्नशिप करेंगे तो इट्स बेटर फॉर इंडियन कंपनीज. राइट. कि जो बच्चे फॉरेन से इंटर्नशिप करके आए उनका आउटलुक उस तरीके का होगा, आउटलुक उस तरीके का होगा, तो प्रोडक्ट उस तरीके के बनाएंगे, सर्विसेज उस तरीके से डिलीवर करेंगे. तो ये इंटर्नशिप्स में नॉट ओनली internships in industry in India, but also it should be abroad. Right. Thank you very much, sir. The way you describe this internship and the importance of employment, and as you focused कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको लेकर के, वो सच में बहुत ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस को. मैं एक कोई भी चॉइस टॉपिक आपको ज़रूर देना चाहूँगा फैला टॉक में, कि जिसको आप हमारे इस टॉक शो के थ्रू हाईलाइट करना चाहते हो. माइट बी हमने जो 3-4-5 टॉपिक चूज़ किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी उनको जानना समझना चाहते हैं. बट एनी ऑफ द टॉपिक दैट यू वांट टू मेंशन विद योर चॉइस एंड यू वांट टू कन्वे टू योर फॉलोअर एंड एजुकेशन कम्युनिटी जो भी हमारे इस टॉक शो को देखेंगे, सो आई वांट टू वेलकम यू फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. जो मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा है, इज दैट वी शुड गिव इम्पोर्टेंस एंड रिकॉग्निशन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम. ओके. ठीक है.
जो हमारे सनातन पद्धति से, वैदिक नॉलेज से जो चीज़ें आ रही हैं, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। ओके। मैं अभी G20 की समिट में था पौंडीचेरी में। जी। वहाँ मीटिंग में हम लोगों ने उस पे डॉक्टर भूषण पटवर्धन जो चेयरमैन नैक हैं, नेक्स्ट चेयरमैन तो है। उन्होंने एक पेपर प्रेज़ेंट किया था। ओके। बिकॉज़ ही इज़ बेसिकली आयुर्वेदिक, ही इज़ अ बायोसाइंटिस्ट। बायोसाइंटिस्ट। तो उनका तवज्जो पूरा आयुर्वेदिक के ऊपर है। सी बेसिकली हेल्थ केयर इज़ एक्चुअली एज़ पर द वेस्टर्न साइड इज़ हेल्थ स्केयर, इज़ नॉट हेल्थ केयर, हेल्थ स्केयर। ओके। पहले आप लोगों को डराते हो कि स्वाइन फ्लू है। हाँ। पहले आपने स्वाइन फ्लू बनाया, जी। स्वाइन फ्लू की दवाई बनाई, जी। दुनिया को डराया कि मर जाओगे, हमारी दवाई ले लो। करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोग नेशंस डालते हैं स्वाइन फ्लू की दवाई स्वाइन फ्लू खरीदने की के लिए। दवाई के लिए। स्वाइन फ्लू की जो डेथ है, दे आर नॉट ओनली लेस देन 0.05%। उससे ज़्यादा डेथ कॉमन कोल्ड से होती है, उससे ज़्यादा डेथ एक्सीडेंट में होती है, उससे ज़्यादा डेथ दूसरी चीज़ों से दूसरी होती है। चीजों में होती है। पर स्वाइन फ्लू का एक हौवा बना दिया। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हाँ, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल करते हाँ। हैं। मतलब पहले आपको बीमार करेंगे, जी। फिर बीमार होने की दवाई देंगे जी। और उसके बाद में फिर आपको बोलेंगे कि अब आप हेल्दी हो गए। राइट। एज़ अपोज़्ड टू दिस हमारा जो इंडियन सिस्टम है, वो कहता है कि भई टाइम पे उठो, काढ़ा पी लो, हल्दी का दूध पी लो। राइट। The emphasis on Indian knowledge system is on prevention and not as much on cure. राइट। That means as per our system, we talk of health. राइट। हमारे यहाँ किस तरीके का आप खाना खाएं, किस तरीके के आप विचार रखें। आज सुबह मैं बाबा रामदेव का प्रोग्राम देख रहा था। He जी। was saying the root cause of most of the illness is your mental state. इट्स मेंटल स्टेट। Is your mental state. अगर आप अच्छे सम्मिलित परिवार में रह रहे हैं, परिवार खुशहाल है, सब एक दूसरे का प्रेम है, इज्जत है, जी। बीमार लोग नहीं पड़ते हैं। नहीं पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम। राइट। हमारा एक अलग जीवन जीने का, जीवन को समझने का तरीका है। जी। और सो एम्फेसिस आई वुड अपील टू ऑल द एजुकेटर्स, एनी टॉपिक दैट यू थिंक ऑफ, एनी लर्निंग एरिया, our knowledge, Indian knowledge system has got enough depth of material in that. राइट। If you talk of economics, there is no better way other than Kautilya's, Chanakya's Arthashastra. राइट। राइट। That is the far more comprehensive and complete document on economics. चरक के कई ऐसे, चरक संहिता में ऐसे कई उपचार दिए गए हैं, which even they don't let you fall into cancer before you can. सो एंड देयर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कि एलोपैथी में उसकी दवाइयाँ नहीं हैं। जी। सिमिलरली इन मैकेनिक्स ऑल्सो देर आर वेज, देर आर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम. सो माई अपील टू द एजुकेशनिस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो द NEP's focus area, is that we must have education system what is required for this part of the world. And therefore, let us give importance to our Indian knowledge system, formal or informal. ओके। Formal is which is there in Vedantas, in Upanishads and all that. That's a formal. दैट्स फॉर्मल। पर जो इनफॉर्मल सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ही बोलूँगा कि आप एक छोटा सा किसी एक को बोलें कि भाई आप मेरे फादर से, मेरी मदर से, मेरी चाची से, मेरी ताई से, मेरे फलाने फलाने रिलेटिव से आप खाली 15-15 मिनट पूछो कि भाई खांसी आती है तो क्या करते हैं, तकलीफ सिर दुख रहा होता है तो क्या करते हैं, एंड जस्ट कैप्चर इट. दे विल गिव यू ऑल द रेमेडीज। दे विल गिव यू ऑल द, जिसको बोलते हैं नाना नानी के जी। नुस्खे जी। जी। या जी। ये. बट वी हैव नेवर डॉक्यूमेंटेड इट. हाँ। We have never documented it. So then when you haven't documented it, the Western world says that this is not a knowledge. This is only a hoax. राइट। If we document it and then we apply it to 100 people and do a survey, आपने काढ़ा पिया था तो आपको कितने दिन में ठीक हो गए, कितने दिन में ठीक हो गए? you come, this is an evidence, दिस इज द एविडेंस। this is a clinical trial of our own kind. राइट। राइट। Then I patent it. दैट रात को हल्दी और अदरक का दूध पीने से आपको जुकाम नहीं होता है, आपका सर दर्द और पेट दर्द खराब होता, जो ठीक होता है, एंड यू रिमेन हेल्दी. राइट। दैट बिकम्स पेटेंट. इंपॉर्टेंस इज देयर फॉर इन एनी वॉक ऑफ एग्रीकल्चर में. जिस तरीके से हम धान उगाते हैं, हमारे किसान धान उगाते हैं, इट्स कम आउट ऑफ अ प्रैक्टिस. हाँ। व्हाई शुड आई फॉलो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस? आई गॉट नथिंग अगेंस्ट वेस्टर्न प्रैक्टिस. ज्ञान जहां से आता है अच्छा होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि आप खुद के घर में इतना ज्ञान है,
हम वो चीज करें, बिकॉज हमारे ज्ञान में कोलैबोरेशन इकोनॉमिक्स निहित है, नीड है। वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे हमारा जो जो सस्टेनेबल, जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रही है, सस्टेनेबिलिटी वाज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। राइट। ये पहले हम पैकिंग बाहर से नहीं करते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो थैला लेके जाते थे थैला सब्जी लेके के। जाते थे। ठीक है, ये पैकिंग तो बाद में आई, बाद में आई। बिकॉज ड्यूपॉन्ट ने एक मटेरियल निकाल दिया, ड्यूपॉन्ट सेल द मटेरियल टू द होल वर्ल्ड। राइट। अब हम सब पैकिंग के गुलाम हो गए, पैकिंग के गुलाम हो गए। जबकि जरूरत थी नहीं। राइट। लोग दूध भी लेने जाते थे तो घर से कैन लेके जाते कैन थे, लेके जाते थे। वहां गैया से दूध लगवाया जी। और कैन में दूध लेकर के आ जी। गए। जी। ठीक है, नो क्वेश्चन ऑफ टेट्रा पैक, नो, नॉट नो एट ऑल। क्वेश्चन ऑफ प्रिजर्वेशन, इट्स हेल्दी लिविंग। सो we must give regard to the Indian knowledge इंडियन नॉलेज system is my सिस्टम। appeal to all educationists राइट। in a formal systematic manner, so that जो एक सपना है हमारी प्रेजेंट सरकार का और हम सबका कि भारत विश्व गुरु, जो स्वामी विवेकानंद डिक्लेयर कर गए थे आज से 125 साल पहले, जी। जी। कि इस सदी में जो विश्व गुरु होगा वो भारत होगा, वो तभी होगा जब हम अपनी प्रैक्टिस से खुद प्रमोट करें। जी। ये दुख की बात है कि मेडिकल क्लेम आपको एलोपैथी दवाइयों के लिए मिलता है, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। अब आयुष हो गया है, अभी ये जी। सरकार कोशिश कर रही है, बट एज ए सोसाइटी वी शुड से कि हम वी विल से नो टू दीज मेडिसिन। राइट। आई पर्सनली प्रैक्टिस इट। व्हेन आई फॉल इल, आई फर्स्ट ट्राई एंड टेक द होम रेमेडीज एंड ट्राई एंड क्योर माई सेल्फ। अगर उसके ऊपर निकली बात तो देन यू गो एंड ट्राई। राइट। 90% टाइम आई बिकम ओके बाय द होम रेमेडीज होम ओनली। रेमेडीज। सो रिमेन हेल्दी। राइट। सेम थिंग इज ट्रू अबाउट एनी वॉक ऑफ लाइफ। रिलेशनशिप्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, राइट। इन सब में हमारी पद्धतियां हैं। बिल्कुल। पहले हमारा वाटर सिस्टम हुआ करता था इतना अच्छा, Absolutely. जो इकोनॉमिक्स को इतना स्ट्रांग बना के रखता था। आपकी जरूरत मैं पूरी करता हूँ, मेरी जरूरत आप पूरी करते हो, तो कंपटीशन का माहौल था ही। Correct. So this is Indian knowledge system. राइट। 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 Thank you. राइट। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम को जोड़ देने पर जो आपने बात कही वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या फिर जो हमारा पुरानी जो पद्धति है उनमें अवेलेबल ना हो। मोस्टली हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, बस ये कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं तो माइट बी उनकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इस फैला टॉक्स के सीरीज़ के अंदर अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, रिसर्च के ऊपर बात करी, एजुकेशन लीडर्स के लिए कौन-सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगर आप एक अच्छा एजुकेशन लीडर बनना चाहते हैं तो। हमने इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करी, हमने कोलैबोरेशन के ऊपर बात करी जो सच में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब तक 3-4 फैला टॉक्स में मैं इस पॉइंट को नोटिस कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आपके मेंटरशिप में और बाकी के एजुकेशनिस्ट के मेंटरशिप में हम एक व्हाइट पेपर सॉल्यूशन बना करके अपनी रेगुलेटरीज़ को दें कि पहले हमें फैकल्टी एक्सचेंज या नॉलेज एक्सचेंज को लेके इंटरनली कोलैबोरेशन करना चाहिए। आप बाहर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बुला रहे हैं, पहले यहाँ पर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, हम पहले यहाँ एक हो जाएँ। वरना मुझे लगता है सर जो बाहर से भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उसमें भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी कितने बाहर के कैंपसेस को यहाँ लेकर के आ रही है। मुझे उसमें यही लगता है। सर थैंक यू वेरी मच। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में चाहूँगा कि फैला के लिए आप 2 वर्ड्स ज़रूर कहें कि फैला आने वाले टाइम में किन चीज़ों को फ़ोकस करे और आपके अनुभव का और बाकी सभी एजुकेशनिस्ट के अनुभव को हम लोग अ, यूज़ करते हुए फैला को एक अलग लेवल पर लेके जाएँ और सोसाइटी को पर्पसफुली कोई सॉल्यूशन दे पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि किन चीज़ों पे हम गौर करें और फैला के लिए 2 वर्ड्स आपकी तरफ से। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो फैला की जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम ही इतना सुंदर है, जी सर। फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर सर। और इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़रूरत है कि इस पे विचार बने, जी। फ्रेमवर्क्स बने, जी। साझा हो एक दूसरे से, लोग जी। इसको यूज़ करें। एंड फैला इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जी सर। which unites all the higher education leaders and administrators to learn from each other, to improve practices, improve efficiency. So FELA is a wonderful concept and I congratulate you Thank you, sir. for conceiving it. I also congratulate you for bringing it on the ground so fast and your entire team of FELA, Yes. जो आपकी पूरी टीम है वो बहुत मेहनत से इसमें काम कर रही है और मैं बहुत जी सर। शुभकामनाएं दूंगा आप लोगों को कि ये FELA दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बिल्कुल मेरे को सर। नहीं लगता किसी और एसोसिएशन ने इतने कम समय में इतना हासिल किया है जितना फैला ने कर लिया है। जी सर, प्रयास है। सो इट इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट and its wonderful execution because of your determination
and your team's hard work which you are doing. So Right, sir. FELA is a very welcome organization which has come on the higher education space. Right, sir. दो तीन चीज़ें जो मैं FELA से जो उम्मीद कर रहा हूँ, और जो कि मैं अब FELA का एक सदस्य हो गया जी हूँ, सर। एक तो ये जो शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग का जो FELA टॉक्स है, जी सर। ये मैं चाहूँगा कि और एक बड़ा रूप ले, ताकि ये FELA टॉक्स बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी चीज़ हो जाए कि कभी किसी को कोई चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है, नया आइडिया ढूंढना है, वो FELA टॉक्स की लाइब्रेरी पे जाए और उसको वहाँ से काफ़ी कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन मिल जाए। FELA टॉक्स एक माध्यम भी बन जाए कि अगर सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करें और फिर एक महीने में एक बार डिस्कशन हो कि ये 5 प्रॉब्लम्स हमने पिकअप की हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस हम सब मिलकर के ढूंढें. So it becomes a collaborative way of finding solutions. Right. So FELA Talks is a wonderful initiative, and I wish that this becomes bigger and bigger with every iteration, and I'm sure that it will become. It will, sir. And it should actually finally become a complete platform for showcasing, for learning, FELA news type, something like that. FELA Talks आगे परिवर्तित हो जाए FELA न्यूज़ में, बिल्कुल सर। जो पूरा देश यूज़ कर पाए, जो लोग भी एजुकेशन जगत से हैं वो यूज़ कर पाएँ. So FELA, the second thing is that FELA Talks becoming big is one aspiration, one expectation I have from the team FELA. And definitely we will do, sir. The second aspect that I would like team FELA to do is to pick up issues in a focused manner. See, you cannot do many things all the time. So, for example, one thing that FELA can, and it can be a yearly focus. This year is the FELA's year of academic administrators. Okay. Suppose. जी. तो अच्छे academic processes उस पे गोष्ठी हो, विचार हो, जी. ताकि you do processes efficiently and economically. Right. And this becomes a kind of a framework. Right. So one is that a focus every year which FELA should bring. Right. And the idea of focus is that depth will come. Then more and more focused idea will come, and each year it becomes, ultimately these can become small sub-arms of FELA. FELA Center for Academic Administration. Right. FELA Center for Faculty Development. Right. FELA Center for Research. FELA Center for XYZ. Right. These will become eventually, ऐसा अगर focus हो जाएगा तो there's a second thing that I would like to go. Definitely, sir. Third thing that I would like FELA to do is to celebrate success of leaders. Of who are, so, like FELA's top 10 leaders felicitated every year, and also top 10 and other felicitation. So सब लोग को लगे कि भाई मैं इस FELA में मेरी appreciation हो रही है, effort हो रही है. So yearly kind of a program where you felicitate top 10 universities, you felicitate top 10 academic administrators, top 10 researchers. So these are FELA stars of research, FELA stars of administration, FELA star universities. Right. Of 2023. Right. And there can be a panel of, since we are a set of academicians which are there in FELA, एक फॉर्म रहेगा, लोग उसको अप्लाई करेंगे, and then we will work out. People feel good about it. It will be genuine, because this will be because this is by the academicians, for the academicians, so there is no stakes involved. Made by academicians and made for academicians. For academicians. Right. So 3 things I have told you. Basically, FELA Talks becoming FELA News. Right. Second one is a focused manthan every year of particular aspect, which can result into a kind of a FELA center. Right. And third one is felicitation of excellence by FELA every year. Right, sir. Definitely. I wish all the best. And Som, you and your team are doing wonderful work. I said it earlier. Thank you very much. कि आपने, as a young entrepreneur, you have picked up this topic. And I wish there are more such people like Som who are actually focusing, then we will really become Vishwaguru. So wish you all the best, and God bless you with success and performance for FELA. Thank you very much, sir, for your suggestions, your advice, your blessings, and definitely FELA, Federation of Education Leader and Administrator,
सोसाइटी को, एजुकेशन कम्युनिटी को, हायर एजुकेशन कम्युनिटी को, पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जो भी बैरियर्स इसमें अवेलेबल हैं, उन सब बैरियर्स को रिमूव करके एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आएगा। आप लोगों के अनुभव का, आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के एडवाइस का पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।